Scholars, this is session 2 of accounting ratios. Today's session is very important and we will study the first ratio under ratio analysis, that is liquidity ratio, in detail with its formulae, explanation and with the help of some illustrations. So let's start. First of all, liquidity ratio. The meaning is already clear to you in your video session 1. Once again I repeat it for you. The liquidity ratio's purpose is to know short-term financial position of a company. Under liquidity ratio, there are two further sub-ratios. Number 1 is current ratio. Current ratio's formula is current assets upon current liabilities. And its ideal ratio, that is generally accepted ratio, is 2:1. It is considered that if a firm has its current assets double, that is 2 times more than current liabilities, then the financial position of a business is good or strong. The items which become part of current asset: cash, bank, marketable securities, inventories, prepaid debtors, bills receivables, all the prepaid expenses, interest or any income which is accrued, and any advance tax which is made. Under current liabilities, we have items like creditors, bills payables, all types of provisions like provision for tax, provision for depreciation, provision for doubtful debt, outstanding expenses, bank overdraft. Be careful, bank overdraft and bank loan are two different items. While treating current liabilities, we take into consideration bank overdraft. Bank loan को हम नहीं लेते. The second type of ratio which we have to discuss today is liquid ratio. Liquid ratio is also known as asset test ratio or quick ratio. Formula for it is liquid assets divided by current liabilities. An ideal or thumb rule for liquid ratio is 1:1. That means if the firm's or the company's liquid assets are equal to current liabilities, we consider that their short-term financial position is strong or good. The items which become part of liquid assets. Liquid assets includes those assets which can be quickly converted into cash with minimum loss or no loss of value. The items included under liquid assets are cash, bank, marketable securities and receivables. Receivables include debtors and bills receivables. Another formula for calculating liquid assets is current assets minus inventory minus prepaid expenses. Now keep it to mind, while we prepare balance sheet, जब हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं कंपनीज की, उसमें इन्वेंट्री के अंदर हम 5 आइटम्स को शो करते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. व्हेन वी प्रिपेयर बैलेंस शीट, we show 5 items under the title of inventory. These are raw material, work in progress, finished goods, stores and spares, loose tools. But in this chapter of accounting ratios, जब आप यहाँ पे inventory consider करते हैं, उसमें हम सिर्फ 3 ही items लेते हैं. That is your raw material, work in progress and finished goods. I am again emphasizing loose tools as well as stores and spares are not taken in the inventories while solving the sum of current ratio or liquid ratio. Keep this in mind. Now let's proceed. Even there is a formula for working capital also which will be required to solve certain sums under the title of liquid ratios. That is, working capital is equal to current assets minus current liabilities. Now let's understand with the help of an illustration. Here it goes. We have to calculate all the liquidity ratios, that are 2, current ratio and liquid ratio.
with the help of following information. We have cash, bills receivables, inventory, payables, bank overdraft, other current liabilities, other current assets, that is prepaid and tax amounting to 50,000. Using this information, we have to calculate current ratio, liquid ratio, working capital. Let's proceed. Step number 1, you have to write the formula one by one. First item, you have to find current ratio. So we need the detail of current assets and current liabilities. Current ratio is equal to current assets upon current liabilities. So it's important that we write the detail. What type of current assets we have in our question? It is cash is available, plus receivables are available, plus inventory, plus we have other current assets, Under current liabilities, we do have number 1, payables plus bank overdraft. It is bank overdraft plus we have other current liabilities. Now substitute the values into the formula and we will proceed. Therefore, your current ratio is equal to current assets. Substitute the value. It is 16,000 plus 1,54,000 plus 1,20,000 plus 50,000. So once we will add this all four values, the result will be 3,40,000 divided by the value of current liabilities, that is 1,50,000 for payables, and then 10,000 and further 10,000. This gives us 1,70,000. Divide this both. Our answer is in terms of absolute ratio, that is 2:1. So we can easily comment that the current ratio of this organization is 2:1, which is equal to the ideal ratio. Therefore, its financial position is strong. Moving on to second part, liquid ratios. For liquid ratio, we have to use the formula liquid assets divided by current liabilities. Current liabilities we have already calculated, equal to 1,70,000, so we will not calculate again. Liquid assets formula we need to apply. Your liquid assets formula is current assets minus inventory and minus other items. Minus inventory minus prepaid or other current assets. So if we exclude from this 3,40,000, 50,000 and inventory 1,20,000, we have 1,70,000 and the value of liquid assets. Substitute the values in the formula. Liquid ratio is equal to 1,70,000 are the liquid assets divided by 1,70,000 is the value of current liabilities. So therefore our ratio is perfect, 1:1. The comment we can give is our liquid ratio for this firm or this company is 1:1, which is equal to the ideal ratio. Therefore, the liquidity position of the firm is strong. For your guidance and information, higher the ratio, it is considered better, but lower the ratio is not satisfactory or unsatisfactory. Last part of this was we are supposed to calculate working capital also. So working capital formula we know very well. It is current assets minus current liabilities. If we see from this formula, our current assets were 3,40,000, current liabilities were 1,70,000. Therefore, 340 minus 170 will give us the result of 1,70,000. So that's it for the first illustration. Let's move on to the second category of the sum. This is first style in which the examiner can ask you a sum. This is the second category which we call as missing values.
In this situation, ratio will be given to you, answer is given to you, and you have to find out some missing element. It can be find inventory, find current assets, find liquid assets, find current liabilities, something like that. Let's proceed. In this situation, current ratio is 1.75 and current liability is 80,000. We have to find the working capital. To start with our sums, step number 1, we have to start with the information which is provided to us. अपने क्वेश्चन में से आप देखो कि आपको किस फॉर्मूला की वैल्यू दी है, हम वहीं से सम स्टार्ट करेंगे. हमें क्वेश्चन में करंट रेशियो की वैल्यू दी है 1.75. बी वेरी अलर्ट एंड अटेंटिव, पे अटेंशन. बच्चे यहाँ पे समटाइम्स दे कमिट अ मिस्टेक. क्या मिस्टेक करते हैं? हमारा आंसर हमेशा एब्सोल्यूट रेशियो में होता है. सो दिस इज गिवन 1.75. बच्चे इसको क्या यूज करते हैं that this is for numerator and this is for denominator. No, look at what I want to say. If our current ratio formula is current assets upon current liabilities, now second step is we have to substitute the information available with us. Current ratio is 1.75. इसका मतलब हमें ये करंट रेशियो यहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है और ये बाई मिस्टेक 1 पॉइंट नहीं लिखा हुआ. इट इज डेसिमल, ये रेशियो का साइन नहीं है. सो इट इज टू बी रिटन लाइक दिस 1.75 इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में पीछे कुछ नहीं है. सो यू कैन राइट इट डिनोमिनेटर इज 1 इज इक्वल टू करंट एसेट्स. हमें क्वेश्चन में नहीं दी है, वी विल राइट इट एज इट इज. This is unknown variable जो हमें find करना है. Whereas current liabilities are given 80,000, substitute this in the denominator, 80,000 in denominator, cross multiply this from here. Current assets is equal to 1.75 multiplied by 80,000 and we will get our answer of current assets. So current assets are equal to 1,40,000. This is the value of our current assets, and they have told us to find working capital. Working capital formula is current assets minus current liabilities. Substitute current assets we have just calculated, which is 1,40,000 minus current liabilities. Current liabilities value is 80,000. Once we subtract, so we get a working capital which is 60,000. That's it with example number 2. Let's switch over to example number 3. This is another category of missing value. Let's proceed. Working capital is given, current ratio is given. See in this question and this, here it is given 3.5 ratio 2. So this is a value for numerator, this is value for denominator. In this situation, it was no value denominator was given. You can always assume it as 1 because answer is always in this form, numerator over denominator. Working capital and CR is given. Let us start from CR. We have to find the value of current assets. Applying CR, the formula of current ratio is equal to current assets upon current liabilities. Once we substitute the values, we do have from here 3.5 which is in numerator divided by 2 in denominator is equal to cross further. If we want to cross multiply, this is CA upon CL, that is current assets upon current liabilities. Now we need to see out of this which values are given to us in the question. पिछले क्वेश्चन में करंट लायबिलिटीज की वैल्यू गिवन थी जो हमने डिनोमिनेटर में सब्स्टिट्यूट की, बट इन दिस सिचुएशन हमारे पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों की वैल्यूज नहीं है. सो वी हैव टू मेक एन इक्वेशन फ्रॉम हियर. मूविंग ऑन, क्रॉस मल्टीप्लाई विद दिस साइड, सो वी can we write it like this, that current asset is equal to 3.5 CL divided by 2, equation number 1. What I have done, this current liabilities I have cross multiplied to find the answer of current asset and we have converted one equation. Step number 2,
मेरे पास ये इंफॉर्मेशन मैंने यूज कर ली, अब एक यही इंफॉर्मेशन बची है. So we'll continue with this. Let's go on. Working capital is equal to current assets upon current liabilities. Now further जो वैल्यू given है आप उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. Working capital की वैल्यू है 90,000. So let it be here 90,000 is equal to current assets को हम इक्वेशन 1 में से यूज करेंगे. So current assets from equation 1 is 3.5 CL divided by 2. This will be copied over here. 3.5 CL divided by 2 minus CL. If I further continue with it, LCM लेंगे तो this 2 will be multiplied here and this 2 will also be multiplied both the sides. So multiplying 2 on both the sides, we get 1,80,000. 1,80,000. ये हम क्यों कर रहे हैं? We have to take an LCM. This will become 2CL and this will be multiplied this side. So this is 3.5 CL minus 2CL by taking LCM. Next step is from here these units are same. So 3.5 CL minus 2 CL will give us 1.5 CL. Next step, 1,80,000 is equal to 1.5 CL. Next step, you have to substitute this cross multiply it and you will get the answer of CL. This implies that 1,80,000 divided by 1.5 will get answer of CL. Current liability is equal to 1,20,000. Current liability is equal to 1,20,000. But we are supposed to find the answer for current asset. हमारा आंसर भी आया है current liabilities. This we will substitute in our equation number 1 and we can easily find the answer of current assets. So 1,20,000 multiplied by 3.5. So due to space paucity, I am continuing this part here. We have substituting it in equation 1. Your current assets are equal to 3.5 multiplied by 1,20,000 divided by 2. So from this decimal 0 is eliminated. With this 2 we will have 6,000, 6, 1, 2, 3, 6,000 and then further multiplied by 3.5 we will get the value of current assets. So this is 6, 5, 30, 6, 3, 18 and 21. 21, 2,10,000. This is the value of current assets. I repeat. सबसे पहले आप फॉर्मूला लगाओगे, उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, देन डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. यहाँ से हमने बनाई इक्वेशन नंबर 1 इन दी टर्म्स ऑफ करंट एसेट्स. फिर हमने वर्किंग कैपिटल को फॉर्मूला को लगाया. वर्किंग कैपिटल इज करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज. वर्किंग कैपिटल की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 90,000, उसको सब्स्टिट्यूट की. करंट एसेट्स को इक्वेशन नंबर 1 में से सब्स्टिट्यूट किया. इनको सॉल्व करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके वी गॉट द आंसर ऑफ करंट लायबिलिटीज 1,20,000. और 1,20,000 को हमने इक्वेशन 1 में दोबारा सब्स्टिट्यूट किया. सो वी गॉट द आंसर ऑफ करंट एसेट्स. नेक्स्ट एग्जांपल इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग. इन दिस एग्जांपल वी हैव बीन गिवन करंट रेशियो एज वेल एज लिक्विड रेशियो. दोबारा देखो इसमें 2.10 तो आप डिनोमिनेटर को लोगे 1. सिमिलरली लिक्विड रेशियो का आंसर भी गिवन है. इन्वेंटरी वैल्यू इज गिवन. वी हैव टू फाइंड लिक्विड एसेट्स एंड वर्किंग कैपिटल. लेट्स कंटिन्यू. For your solution, in step number 1, we'll start with current ratio. So your current ratio is equal to current assets upon current liabilities. Substitute whatever information we have. So current ratio left side पे आप substitute करेंगे 2.10 upon 1 is equal to current assets divided by current liability. हमारे क्वेश्चन में current assets, current liabilities दोनों की वैल्यू नहीं है. Again we will convert the equation. So cross multiplying करके you will get
1. Moving on with second part, that is liquid ratio. LR is given. LR is equal to liquid assets upon current liabilities. Liquid ratio of value is 1.90. It should be 2.90. Let's correct it. It should be 2.90. So this is 2.90. So liquid assets cross multiply, we have the value 1.90 upon 1 is equal to liquid assets upon current liabilities cross multiply, means we will get the value of liquid assets is equal to 1.90 CL. Now step number 2, अब हम लिक्विड एसेट का फॉर्मूला लगाएंगे. हियर इट इज लिक्विड एसेट वाज करंट एसेट्स माइनस इन्वेंटरी माइनस प्रीपेड. तो जो हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है उसी को यूज करेंगे. हमारे क्वेश्चन में इन्वेंटरी है, प्रीपेड नहीं है, तो लीव प्रीपेड. लिक्विड एसेट को ब्रेक करेंगे. लिक्विड एसेट कैन बी रिटन एज करंट एसेट माइनस इन्वेंटरी. This is equal to 1.90 CL. ये मैंने इस इक्वेशन को ब्रेक किया. अब इस इक्वेशन में हम इधर से इन्वेंटरी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और इक्वेशन 1 में से करंट एसेट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. इट इज सिंपल एंड प्योर मैथमेटिक्स. करंट एसेट्स को मैंने यहां से सब्स्टिट्यूट किया, दैट इज 2.90, दैट इज 2.90 minus 2.90 CL माइनस इन्वेंटरी की वैल्यू हम क्वेश्चन में से सब्स्टिट्यूट करेंगे. दिस इज 10,000 इज इक्वल टू 1.90 CL. नाउ दीज आर लाइक यूनिट्स. लीनियर इक्वेशंस आगे चेंज करेंगे एंड फ्रॉम हियर यू विल गेट 2.9 minus 1.90 will become 1 CL is equal to 10,000. This 10,000 is value of our current liabilities. But हमें फाइंड करना है लिक्विड एसेट्स एंड वर्किंग कैपिटल. अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे. We will get the answer of current, or you can substitute in equation 2 anywhere. If I substitute it here, I will directly get my liquid assets. So the liquid assets is equal to current liability is 10,000. It is 1.90 multiplied by 10,000. 2 zeros eliminated. We will get 19,000. तो हमारी लिक्विड एसेट्स की वैल्यू आ गई 19,000. सी अगेन हाउ आई हैव डन. मैंने ये करंट लायबिलिटीज को इस इक्वेशन में मिक्स किया. तो 1.90 multiplied by 10,000. डेसिमल है, 2 zeros कट जाएंगे, so you will have 19,000. 19,000 is value of our liquid assets. फर्स्ट आंसर आपके पास आ गया. सेकंड स्टेप में ही वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल फॉर्मूला इज करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज. अब हमारे पास करंट लायबिलिटीज की वैल्यू है, करंट एसेट्स फाइंड करेंगे. सो वी हैव टू सब्स्टिट्यूट करंट लायबिलिटीज हियर आल्सो. फ्रॉम हियर वी विल गेट आवर करंट एसेट्स इफ वी सब्स्टिट्यूट इट. करंट लायबिलिटीज की 10,000 आपने यहां सब्स्टिट्यूट की, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट द आंसर ऑफ करंट एसेट्स एज 29,000. नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप इज हमें फाइंड करनी है वर्किंग कैपिटल. सो वी ऑल आर अवेयर दैट वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज. हमारी करंट एसेट्स हैं 29,000, करंट लायबिलिटीज हैं हमारी 10,000. इन दोनों को माइनस करेंगे, वी विल गेट द आंसर 19,000. 29,000 minus 10,000 is equal to 19,000. So this is how we have tried 3 different category sums. Moving on to last category. This is again important. अब इस situation, these are called situational statements. इसमें हमें एक करंट रेशियो या लिक्विड रेशियो ऑलरेडी गिवन होगी और देयर वुड बी सर्टेन ट्रांजैक्शंस और हमें कैलकुलेट करना है कि इस ट्रांजैक्शन के होने से
हमारी करंट रेशियो इंप्रूव होगी, कांस्टेंट रहेगी या डिक्लाइन होगी. सो व्हाट इट मींस दैट according to this question, current ratio is given to ratio 1. Due to following statements or due to following transactions, हमें ये बताना है कि हमारी करंट रेशियो किससे इंप्रूव होगी, डिक्लाइन होगी या कांस्टेंट रहेगी. सिचुएशन नंबर 1 is given furniture purchase for cash. लॉजिक इज वेरी सिंपल. पहले आप अपनी करंट रेशियो लिख लो. करंट रेशियो इज गिवन 2:1. तो मैं अपने से कोई भी डमी वैल्यू अज्यूम कर लेता हूं जो कि मेरे आंसर को यही कांस्टेंट रखे. कैन आई राइट इन प्लेस ऑफ 2 lakh, and in place of my 1 as 1 lakh. अब देखो, इफ इन केस मैं इनको कैंसिल करता हूं तो मेरा दोबारा आंसर आ गया 2:1. आई हैव नथिंग डन स्पेशल, जस्ट डमी वैल्यूज दे दी, लेकिन अपना आंसर वो भी सेम कांस्टेंट रखा है. दैट मींस मेरे करंट एसेट्स हैं 2 lakh, करंट लायबिलिटीज हैं अगर 1 lakh, तो मेरी करंट रेशियो बनेगी 2:1. इट इज सेम. अब हमने ये देखना है कि जब कोई भी ट्रांजैक्शन हुई उसका हमारी करंट रेशियो के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा. रेशियो इंप्रूव होगी, डिक्लाइन होगी या कांस्टेंट रहेगी. लेट्स गो ऑन. फर्स्ट सिचुएशन इज फर्नीचर परचेज फॉर कैश. नाउ व्हेन फर्नीचर इज परचेज तो बिजनेस में क्या हुआ, फिक्स्ड एसेट इंक्रीज हुआ हमारा. जब आपने फर्नीचर खरीदा तो व्हाट कम्स इन इज फर्नीचर एंड व्हाट गोज आउट इज कैश. इस ट्रांजैक्शन में फिक्स्ड एसेट बढ़ा और एक करंट एसेट कम हुआ. दैट मींस इस ट्रांजैक्शन से मेरी करंट लायबिलिटीज पे कोई चेंज नहीं आता. एंड इफ आई अज्यूम कि मैंने फर्नीचर की कोई वैल्यू नहीं दी, मैं अपने से एक राउंड वैल्यू ले लेता हूं 1 लाख रुपीस. अब इसमें क्या हो रहा है, मेरा 1 लाख का फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है विच इज अ फिक्स्ड एसेट, लेकिन हमारा फॉर्मूला है करंट एसेट्स, इसमें कोई भी फिक्स्ड एसेट नहीं है. तो दैट मींस फर्नीचर परचेज का मेरे करंट एसेट्स पे कोई इंपैक्ट नहीं है. बट वी हैव पेड इट इन कैश. 1 लाख रुपीस कैश आउट हुआ, तो कैश इज अ करंट एसेट. कैश के मूवमेंट से मेरे करंट एसेट्स कम हो जाएंगे. आई एम अज्यूमिंग कि मेरे फर्नीचर की वैल्यू 1 लाख थी, तो 1 लाख की पेमेंट जब करेंगे तो हमारे करंट एसेट्स 2 लाख से रिड्यूस होकर कितने हो जाएंगे, 1 लाख. और हमारा लायबिलिटीज अनचेंज है, वो दोबारा सेम ही है 1 लाख. तो हमारी न्यू रेशियो क्या बनेगी, 1:1. तो व्हाट हैपेंड, इससे हमारी एक्चुअल रेशियो थी 2:1, लेकिन जब हमने फिक्स्ड एसेट परचेज किया और कैश की पेमेंट की, उससे हमारी करंट रेशियो क्या हो गई, डिक्लाइन हुई, डिक्रीज हुई. देयरफॉर दिस इज द केस ऑफ डिक्लाइन. सिमिलरली दे कैन गिव यू इन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस. आपने उस ट्रांजैक्शन में से देखना है कि हमारे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज पे क्या इंपैक्ट आ रहा है. नेक्स्ट, पेड टू क्रेडिटर्स. See, it's again very interesting situation. यही केस रखते हैं. हमारे करंट रेशियो इस 2:1 की, तो we assume it कि हमारे करंट एसेट्स हैं, लेट अस से मैं कम कर लेता हूं 20,000 and 10,000. सेम, राइट. मैंने एक्चुअल में 2 लाख अज्यूम किया था, मैंने 20,000 वर्सेस माय एक्चुअल रेशियो इज 2:1. अब ध्यान से देखो, he is saying paid to creditors. क्रेडिटर्स क्या हैं, दे आर आवर करंट लायबिलिटीज, हियर इट इज मेंशन. एंड जब आप पेमेंट करोगे किसी को, तो ऑफ कोर्स पेमेंट कैश में करोगे या बैंक में करोगे. जब आपने क्रेडिटर्स को पेमेंट की तो आपकी करंट लायबिलिटीज भी ड्रॉप होंगी, और क्योंकि आपने कैश की पेमेंट की या चेक पेमेंट की तो कैश भी ड्रॉप होगा. दैट मींस मेरे करंट एसेट्स भी कम हो रहे हैं, करंट लायबिलिटीज भी कम हो रही हैं. मैं एक दोबारा राउंड फिगर लेता हूं 5,000 रुपीस. दैट मींस 5,000 मेरा यहां से कम होगा क्योंकि मैंने पेमेंट की है, मेरे करंट एसेट्स रिड्यूस हो गए. सिमिलरली 5,000 के मेरे क्रेडिटर्स भी कम हो गए, सेम अमाउंट से 5,000. तो मेरी न्यू रेशियो जो आएगी 15/3 इज 3:1. हमारी एक्चुअल रेशियो क्या थी, 2:1. अब न्यू रेशियो क्या आ रही है, 3:1. सो व्हाट हैपेंड, इट हैज इंप्रूव्ड. This is how you have to solve these situations. One more example I give you for this same case.
suppose if they say that purchase machinery 1 crore rupees by issuing shares of 1 crore. अब हमने खरीदा क्या है, मशीनरी खरीदी. मशीनरी क्या है, फिक्स्ड एसेट है, तो हमारे एसेट्स में कोई चेंज नहीं आई. लेकिन हमने दिया क्या वेंडर को, हमने उसको 1 करोड़ रुपए के शेयर दे दिए. सो व्हेन वी हैव इशूड शेयर्स इज नॉट आवर करंट लायबिलिटी. तो इन दिस सिचुएशन ना आपके करंट एसेट्स चेंज हुए, ना ही करंट लायबिलिटीज चेंज हुई. सो ड्यू टू परचेज ऑफ मशीनरी अगेंस्ट इशू ऑफ शेयर्स, तो इसमें हमारा नो मूवमेंट ऑफ करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज. इस सिचुएशन में हमारा आंसर will be constant. So these were few different categories of the main title